We have just talked about student-centered and roles of different roles of a teacher. Now we are going to talk about activity-based. आप देखिए अगर हम कहते हैं कि it should be student-centered and a teacher can adapt different roles. पीछे अभी बात हमने की है तो आप देखें ना कि different activities can be introduced over there तभी different roles हो सकते हैं ना सिर्फ वरना तो simply अगर आप एक्टिविटीज़ को omit कर देते हैं तो फिर क्या होगा? उसमें तो फिर यही है ना कि एक ही तरह का मोनोटोनस सी टीचिंग होगी और मोनोटोनस सा रोल एक ही होगा टीचर का तो फिर वो क्लास तो ऑटोमेटिकली टीचर सेंटर्ड हो जाती है which we have decided that it should not be because we can't afford to have a teacher centered classroom in literacy skills. While teaching literacies, we must involve the students and by involving students there is an indicator of whether they are moving towards their learning targets or not और फिर उसके लिए हमें student centered classroom के लिए we need to introduce an activity based classroom. तो activity based क्या होता है जी where teaching and learning both are involved in different activities are introduced there और students को उसमें involve करते हैं और teacher वो organize करते हैं control करते हैं prompt करते हैं facilitate करते हैं those activities वो वाला classroom जो है वो आपका activity based classroom होता है but remember all of these activities must be related to your topic and your learning targets and objectives because आपके हर क्लासरूम के कुछ लर्निंग टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आपके जो टीचिंग है आपकी लर्निंग है इट मस्ट रिवॉल्व अराउंड दोज टारगेट्स और उनकी तरफ हमको मूव करना चाहिए सपोज अगर ये आज का हमारा टॉपिक है ये टॉपिक ये जिस पे हम बात कर रहे हैं तो इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके पास एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आई मस्ट बी talking about activity based and I must try to introduce this concept to you अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड पे बात ही नहीं करती हूँ या वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाती हूँ तो इट मीन्स कि मैंने वो ऑब्जेक्टिव जो है उसको हिट नहीं किया और उसको अचीव नहीं किया सो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपका जो भी लर्निंग टारगेट होगा if this is related to alphabets if this is related to sounds if this is related to grammar this is related to sentences whatever so whatever activities you are going to introduce in your classroom all of these must be heading towards that particular target अब क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं सीक्वेंसिंग फॉर इंस्टेंस यू गिव सर्टेन अल्फ़ाबेट्स टू और आगे चल के जब हम टीचिंग अल्फ़ाबेट्स पे बात करेंगे तो अगर आप यू गिव देम सम अल्फ़ाबेट्स एंड यू टेल देम टू सीक्वेंस देम तो ये आपकी एक एक्टिविटी हो गई ना तो ऑब्वियसली अगर आप हायर लेवल पे तो हम अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखते लेकिन जैसे हम लिटरेसी मॉडल्स पे बात की थी कि हम बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करें लेंगे तो हम ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट्स पे बात करना शुरू करेंगे अब सपोज आप उनको कुछ अल्फ़ाबेट्स देते हैं जम्बल्ड मैनर में और यू टेल देम टू सीक्वेंस देम तो दिस इज़ एन एक्टिविटी then again you see sorting again and measuring and you see predicting testing whatever sorting also you are giving them different आपने फिगर्स रखे हुए हैं या डिफरेंट आपने कार्ड्स रखे हुए हैं यू टेल देम टू सॉर्ट आउट के ए जितनों पे लिखा है सॉर्ट देम आउट तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी इसी तरह से जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं एक्टिंग आउट आगे जब आप स्पोकन एक्टिविटीज़ पे बात करते हैं एंड यू गिव देम ऑन रोल प्लेइंग ऑल्सो रोल प्ले जो है वो एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव एक्टिविटी है इन speaking in classroom where you are teaching them how to speak तो उसमें आप उनको कहते हैं जी you have to perform a role of a teacher you have to perform a role of a father you have to perform of a role of a friend तो ये role playing जो है it's very effective activity उसमें similarly comparing memorizing you have to compare the picture suppose you give them two pictures and you just tell किसी बीच की हैं किसी market की हैं and you tell the students to compare these pictures to write down about the similar points to write down about different the points that which are different from in one picture from the other तो ये सारी की सारी जो हैं
क्या हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। यू कैन कंडक्ट देम इन अ ग्रुप, यू कैन कंडक्ट देम इन अ पेयर। दिस इज़ अप टू द टीचर कि वो किस तरह सोचते हैं कि किसको एक इस एक्टिविटी को कैसे होना चाहिए। टीचर का विजन, अभी बात हमने की थी कि इसका ऊपर टीचर का विजन काम करेगा कि हाउ आई शुड बी कंडक्टिंग दिस एक्टिविटी, हाउ आई शुड बी मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लेक्चर, ऑफ माई कोर्स, ऑफ माई मॉड्यूल। म्यूज़िक से रिलेटेड जो हैं आपकी नर्सरी, क्योंकि म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट एक वो है जिसको कि हम एक लिटरेसी क्लासरूम में लाते हैं। नर्सरी राइम्स आपकी जो हैं, दिस इज़ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ दैट। सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ कैन बी introduced and conducted in a literacy classroom.